Dear students, today I am going to discuss very important factors about dynamic equilibrium. These factors are effect of pressure and effect of temperature. Well, let's start with the effect of pressure first. So keep in mind, if we want to explain the effect of pressure, we must keep in mind the moles of the reactants and products. At the same time, you must keep in mind the effect of pressure can only be observed if the reaction mixture contains gaseous, reactants or products. If we have solid or liquid, we will ignore the solid and liquid. We will just compare the moles of the reactants in product containing gases only, because pressure can only be effective if the mixture is with the gases in that. ओके, लेट्स सी, चलते हैं बाकी. तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर हमने प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसके लिए हमें देखना है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसके कितने मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं. तो अब देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल्स हमारे पास 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और अमोनिया के 2 मोल्स हैं. टोटल मोल्स अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स आ जाते हैं. मतलब हमारे पास 4 मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स के. और अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट में 2 मोल्स का बनना, ये सब शो करता है कि जब ये रिएक्शन हुआ होगा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया था, इसलिए अमोनिया के मोल्स कम बने हैं. दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमें नजर आ रहा है. When the pressure will be increased, the reaction will go in the direction of these moles. So moles of ammonia there are 2, and moles of the reactants nitrogen and hydrogen are 4. So if you are asked what is the effect of increase in pressure on the direction and yield of ammonia, answer will be the reaction will become forward and yield of ammonia will increase. Immediately, if pressure is decreased, the reaction will go backward and the yield of ammonia will decrease. So, 2 things are asked in CAI examination. एक तो yield है और दूसरा है direction. तो स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ देखना है कि गैसेस कौन सी हैं और उनके मोल्स कितने हैं. ठीक है, अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं. तो साफ नजर आ रहा है कि 2 मोल्स बनने का मकसद यही है कि इस रिएक्शन मिक्सचर में जब इक्विलिब्रियम हम अटेन कर रहे थे, तो हमने इस पे प्रेशर अप्लाई किया है. इट मींस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर will be seen in the forward direction. So what you will write in the examination now. This was all for your understanding. You will say increase in pressure will shift the reaction forward because the products have least moles. Hence, the yield of the ammonia will increase. Okay. If you, let's say, if the number of moles of left-hand side and right-hand side both are equal, then what you will see? You will say the increase or decrease in pressure will not have any effect on the direction of reaction because uh, both sides contain equal number of moles. For example, I'm giving you one example. If we have hydrogen plus iodine, when they are reacted, they produce
2 moles of hydrogen iodide. No, all are gases here. You see, iodine is solid sugar. Here we are taking as vapors. So now, in this case, the number of moles of the reactants are equal to number of moles of the products. 1 मोल हाइड्रोजन का है और 1 मोल आपका आयोडीन का है और 2 मोल्स आपके प्रोडक्ट्स के हैं। अब इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। अगर प्रेशर इस सिस्टम को, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता, डेफिनेटली मोल्स हमारे पास इक्वल नहीं रहेंगे। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स ज्यादा हो और रिएक्टेंट्स के कम हो, तो फिर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। जब इसको आप डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास 2 मोल्स आ जाएंगे 2NO2 के। दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जो N2O4, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स हैं? यू कैन सी रिएक्टेंट के 1 मोल है और प्रोडक्ट के हमारे पास 2 मोल्स हैं। अब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो मोल्स तो कम हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हैं। इसका मतलब है increase in pressure will not shift the reaction forward, it will shift the reaction backward. That means equilibrium will be disturbed and the reaction will become reverse, backward, and the NO2 moles will be converted back into dinitrogen tetroxide. So unless the equilibrium mixture is not achieved, the reaction will stay backward. So whenever the reaction will go backward, the yield of the product will decrease. तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, वो आप प्रीवियस वीडियो, इसी तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, उसके लिए हम देखते हैं कि रिएक्शन अगर हमारे पास एंडोथर्मिक है तो फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक है तो फिर क्या होगा। व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर तो रिएक्शन है हमारे पास एक्सोथर्मिक, आपको अगर कॉन्सेप्ट हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी हीट जनरेट कर रहा होता है। तो लेट्स सी, अगर हम एक रिएक्शन देख लें, रिएक्शन involving effect of temperature। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेशर के इफेक्ट में आपने मोल्स देखने हैं, रिएक्टेंट्स के कितने हैं, प्रोडक्ट्स के कितने हैं, और इस टेम्परेचर के इफेक्ट में आपने देखना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ही देख लेते हैं, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या है, 2 मोल रिएक्ट कर जाएंगे नाइट्रोजन गैस के 3 moles of hydrogen gas produce 2 moles of। व्यूज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट आर द कंडीशंस टू एस्टेब्लिश डायनामिक सीआईई एग्जामिनेशन में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, because this is
Exothermic, this delta H, this enthalpy change, this is negative. If enthalpy change is negative, that the reaction is exothermic. Got it? चलिए अब अगर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक, you must keep in mind exothermic reactions are those reactions in which heat energy is released, evolved during the course of chemical reaction. So once this reaction starts, we don't need to supply any heat energy because system is generating its own energy. So that is why if we will increase temperature during the formation of ammonia, what will happen? As I told you, always you must keep in mind whenever you will change the factor, equilibrium will be disturbed. Equilibrium will be disturbed. प्लीज आपको मैं दोबारा बता दूं कि dynamic equilibrium mean the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So both reactions go at the same rate. Rate means speed. So equilibrium will be disturbed. Now I told you we have a law, the Chatelier principle. It says whenever a system at equilibrium is disturbed, it will restore its original position by bringing change into it. Either the reaction will go forward, either it will go back. So in this case, if we increase the temperature, equilibrium will be disturbed. The direction of reaction will become, सोचिए जरा, the direction will become backward, in reverse. Because exothermic don't need heat energy during the course of reaction. Reaction will become backward and yield of the product mean ammonia will decrease. Whenever changes will be there, the objective is to attain the equilibrium position again. Similarly, this was exothermic. In this case, hope you understand कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आगे जाने की बजाय रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, और जिससे अमोनिया की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी. लेकिन अगर हम एक और रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, in mind this is endothermic. अच्छा, अगर आप आपसे ये पूछ लें यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया हम तो हो गया ये बैकवर्ड, व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? तो आपने ये कहना है कि क्योंकि टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो इन दिस केस रिएक्शन विल बिकम फॉर्म, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप हीट खुद जनरेट कर रहे होते हैं और सराउंडिंग को लॉस कर रहे होते हैं, इसलिए इनमें अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, उससे अमोनिया का जो यील्ड है, अमाउंट है, वो बढ़ जाएगा. ओके, अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात. तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे, it will be converted into calcium oxide. Very interesting phenomenon with calcium oxide. You see this calcium oxide can be used in agriculture to neutralize the acidic soil. At the same time, it can be used to remove impurities during the extraction of iron. So this is our, this is backward.
So this is reversible reaction. Carbon dioxide will escape. This question has been asked in the examination. Yeah. Let's say in this case, if temperature is increased, what will happen? Upward arrow mean increase. Temperature increase will shift. Just think what are I'm expecting from you. Temperature increase will shift the reaction forward, and yield of ammonia will increase. Sorry, yield of calcium oxide or amount of calcium oxide will. Hope you understand, and vice versa. If we will decrease the temperature, the reaction will become backward, and the amount of calcium oxide produced or gas produced will become less. Okay. Now in the exam, you know what question have been asked from this. The question was, what will happen the direction of reaction if carbon dioxide gas is removed at equilibrium position? So see, the reaction will go forward so that the removed carbon dioxide should be regained. Hope you understand. Okay, if we want to decrease the amount of calcium oxide produced, we will have to remove calcium carbonate. In this case, the reaction will become backward. तो अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं. व्यूअर्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? Dynamic equilibrium is a state in which rate of forward reaction, rate of backward reaction, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए हमें एक क्लोज सिस्टम चाहिए. वो सिस्टम वो होता है जिसमें हीट सिस्टम के अंदर और बाहर जा सकती है, लेकिन जो मैस है, ठीक है, वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती. Keep in mind, we need a closed system to establish dynamic equilibrium. So, system must be closed. The reaction system must be reversible. If the reaction don't reverse, we cannot establish dynamic equilibrium. तो इसमें पहला फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था वो था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मैंने कहा था कि अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, व्हाट विल हैपन, इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको ओरिजिनल पोजीशन में कैसे लाना है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे लाना है, किस लिहाज से बताना होता है. उस केस में अगर हम रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा. जब फॉरवर्ड होगा तो आपने कहना यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज. आपने स्पेसिफिक नाम बताना है, प्रोडक्ट नहीं कहना. मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ. सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो रिएक्शन सिस्टम जो है वो फिर भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा. ये फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों होता है? ताकि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोबारा से रीगेन कर सकें. फिर मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है. तो प्रेशर के इफेक्ट में आपने गैसियस मिक्सचर को देखना है, मोल्स को देखना है. अगर तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल हैं तो इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन एंड यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट. सिमिलरली टेम्परेचर में अगर हम देखते हैं तो अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है एक्सोथर्मिक में वो ऑलरेडी हीट जनरेट कर रहा होता है वंस इट इज स्टार्टेड. इस अगर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारा इसमें लॉस है, रिएक्शन विल बिकम बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड. जब बैकवर्ड होगा तो प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो कम हो जाएगी. अच्छा, अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक में. तो एंडोथर्मिक, एंडो मीन inside, those reactions in which heat energy is involved, required
throughout the course of reaction. As soon as we will stop supplying energy, reaction will stop. That means for endothermic reaction, increase in temperature favors the reaction in the direction of forward products, and the yield of the product will increase. This is all about dynamic equilibrium. This was the third lesson. In first lesson, I told you what is dynamic equilibrium, what are the conditions, which system is required, laws are open. The closed system is required. Then in second lesson, I told you the effect of concentration change on the direction and the effect on the product's yield, whether it increases or decreases. So that's it for today. And this topic is very important according to CAI एग्जामिनेशन. आपको मैं इतना बता दूं कि CAI एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन है, ये अगर 3 फैक्टर्स आ गए हैं तो ये 3 मार्क्स 6 मार्क्स का होगा. एक तो डायरेक्शन का पॉइंट होता है, दूसरा यील्ड का पॉइंट होता है. 2 मार्कों के, ठीक है, 3 फैक्टर आ गए तो 6 मार्क्स हो गए. साथ इसी में वो पूछ लेगा आपसे कि व्हाट विल इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और स्पीड. जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन, या दोबारा मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर. और जब वेन एवर आप टेम्परेचर बढ़ाएं या प्रेशर बढ़ाएं, जो भी करें, तो आपका जो, या कैटलिस्ट यूज करें या आप पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट यूज करें, सब केसेस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से क्या होता है कि हमारा सिर्फ टाइम सेव होता है, बाकी जो एंड प्रोडक्ट है वो उतना ही रहता है. स्पीड बढ़ने से प्रोडक्ट की अमाउंट नहीं बढ़ती है, ना ही डायरेक्शन चेंज होती है. तो डायरेक्शन की और यील्ड की बात हम सिर्फ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड जो कुछ हमने डिस्कस किया है. तो काइंडली बस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं. एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि एक एक जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं डिटेल्ड आपको डिस्कशन के साथ. भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर प्लीज रिवर्ट टू उर्दू. मैंने फिर उन बच्चों के लिए सोचा कि मैं थोड़ा बहुत उर्दू भी बीच में शामिल कर दूंगा इंग्लिश के साथ साथ. बेसिकली बड़ी नोज की हमारा मीडियम तो इंग्लिश ही है, लेकिन फिर भी हमारी मदर लैंग्वेज में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते. So hope you understand. Today we discussed, effect of pressure and effect of temperature on the direction and yield of the product. Allah Hafiz. Thank you. Please do subscribe my channel and comment. आपको आज का लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप फिर भी बता दें. अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी मुझे आपने बता दें. थैंक यू वेरी मच.